Good morning, my friend, and I would like to update you. You can see in the back side the green panel, the source of energy, and midday we are, and I'm going to explain you the derivatives data. Friends, in the morning, the derivatives data are very negative. Even Nifty and Bank Nifty both were negative, but Bank Nifty were showing some strength. But right now, the data is turning positive. And in the morning itself, if you have watched the derivatives counter, there is a huge call writing on 17,800. 17,800 पे बहुत बड़ी call writing थी. It is almost about 2.2 crore. And even Nifty went down below 17,700 also. And that moment, the call writing was 17,700. Call writing was 1.74 crore. But right now, suddenly, within 30 minutes, the call writers, they are unwinding their position, and put writing suddenly increasing their position. So now, the moment when I'm talking, the put writers of 17,700 increased, and right now they are trading more than 1 crore 57 lakh, and the call writer, they are decreasing. It means market is heading again 17,750. So मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब आपको अपने शॉर्ट्स काट लेने चाहिए, क्योंकि 17,700 पे जो पुट राइटर है वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे ग्रेजुअली सुबह जहां पर लगभग सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख के आसपास थे, वो अभी इस समय पुट राइटिंग 1 करोड़ 57 लाख हो चुकी है. ऐसा लग रहा है कि दिन के 2 बजे के आसपास ये पुट राइटर्स मार्केट को हो सकता है दोबारा एक बार फिर से 17,750 की तरफ लेके जाएंगे. दूसरी बात, हिंडाल्को मेटल्स पर थोड़ी नजर रखिए, क्योंकि धीरे धीरे एक गिरावट जो थी वो अब ऑब्जर्व हो रही है. डेरिवेटिव्स डेटा पर थोड़ा सा एक जोर कोशिश दिख रही है. सो हिंडाल्को में आप अगली तेजी करिएगा 415 के ऊपर. तब तक के लिए थैंक यू.